are moving towards the next topic, that is the concept of the crime. So, concept of the crime, as you know, I think you have studied, you have learned in the your previous studies. The concept of crime is that the crime is not defined universally. The definition, universal definition has been not provided. तो क्राइम का जो है वो एक्चुअली कंसेप्ट क्या है? क्राइम जो है वो एक जुर्म को कहा जाता है, एंड द वायलेशन एंड एंटी सोशल एटीट्यूड जो होता है, एंटी सोशल जो बिहेवियर होता है किसी भी पर्सन का, which actually harm the other जो है फेलो सोसाइटी member, that is the anti-social our attitude that actually leads us to commit a crime. So it is very confused and very, you can say, the crime का जो concept है ये बहुत ही जो इसकी theories हैं lot of, और उसको biologically factor से आप define करेंगे कि a person commit the crime actually वो जो internally disturbed person, mentally disordered person, futurally जो है वो जो है awkward person usually commits the crime. ये एक जो है बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ कमिटिंग ऑफ द क्राइम का एक फैक्टर है. सोशोलॉजिकली फैक्टर है कि अगर कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी में अगर कोई डिप्राइव है पर्सन जो है, तो वो फिर क्या करेगा, तो अपनी जो ख्वाहिशें हैं, अपने डिजायर्स हैं, वो एंटी सोशल बिहेवियर के जरिए वो उसका बिहेवियर जो है वो एंटी सोशल हो जाता है. वो उसका बैकग्राउंड सोसाइटी में क्या है, वो उसकी नर्चर कहाँ हुई है और उसकी एजुकेशन क्या है. तो दीज आर दी सोशोलॉजिकल फैक्टर्स. तो उसमें फिर डिफाइन बिहेवियर को जो है जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम इज एक्चुअली डिपेंड अपॉन दी आवर कंडक्ट which relates with the our behavior, जो हमारा behavior है. क्योंकि उसमें दो theories हैं जो Aristotle has said that के actually we are the social animal, humans are the social animal, and Buddha says that के what we think we become, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं, या वो हम जो सोचते हैं वही हम करते हैं. तो इन थ्योरी से क्या पता चलता है, जो स्कॉलर्स जो है जिन्होंने ये थ्योरीज दी हैं, दैट एक्चुअली जो है डिफाइंस एंड गिव्स अस द ह्यूमन बिहेवियर जो है वो एक्चुअली रिलेट करता है कंडक्ट, और अवर कंडक्ट विल डिसाइड के जो है वो दैट कंडक्ट इज नॉर्मल, एक्सेप्टेबल एंड नॉट हार्मफुल टू अदर, एंड हाउ वी विल. अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम जो है उसका ये मकसद है कि इस कंडक्ट को किस तरह ठीक किया जाए. अब हमारा जो कंडक्ट है उसको किस तरह ठीक किया जाए, तो कंडक्ट विल डिपेंड अपॉन द फिजिकल एक्शंस व्हिच रिलेट विद द अवर जो है इंटरनल जो है डायरेक्शंस. कंडक्ट जो है वो फॉलो करता है हमारी सोच से, हमारे इंटेंशन से, और फिर वो उसके साथ वो उसको बिहेव करता है. तो अगर हमारा मेंटल जो हमारी जो इंटेंशन है वो अगर इंटेंशन आर नॉट गुड व्हिच आर इविल, देन कंडक्ट विल बी द इविल. ठीक है ना. तो ये अब ये कॉन्सेप्ट जो है, तो इस कॉन्सेप्ट को आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू हम इस लेक्चर में इंटरनेशनली, नॉट जनरली तो उसमें बहुत सारे आप कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे कि क्राइम किस तरह कॉन्स्टिट्यूट होता है, और क्राइम जो है वो एक वायलेशन किस तरह, वो जो एंटी सोशल वायलेशन है तो वो किस तरह कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसमें हम थोड़ा एडवांस इसको हम देखेंगे. इंग्लिश सोसाइटी, इंग्लिश लॉ क्या कहता है, अमेरिकन लॉ क्या कहता है, और कंटेशनल लॉ जो है इसकी, फिर फ्रेंच, डेनिश, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्राइम, और इस्लामिक लॉ क्या कहता है इसके बारे में. तो ऑल दीज थिंग्स जो है इसको हम इसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में.
तो जो इसका पहला सबसे बड़ा फीचर जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस इज दैट इट डज नॉट कंटेन अ फुल्ली डेवलप्ड थ्योरी ऑफ द जो है वो कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ द क्राइम्स एंड नॉट ओनली क्राइम्स बट इंटरनेशनल क्राइम्स. जो common perception is that international crimes are crimes so serious that they affect the international community as a whole. In other words, the injury is something fundamental to being human in a way that domestic legal system failed to address. अच्छा, वो क्राइम जो है वो यूनिवर्सली अफेक्ट करे सोसाइटीज को, और उसमें जो उस डोमेस्टिक लोकल मुल्क का कानून जो है वो उसको एड्रेस नहीं करता हो, या उसमें उसको रोकने की कोई गुंजाइश ना हो. तो ये conception is slightly misleading. Certain international offenses like rape, murder, or torture correspond largely to the domestic offenses. Some domestic crimes may be just as heinous or grave as the international crimes. So there are two theories are used to explain that जो है वो national crime is इंटरनेशनल क्राइम जो है वो जिस तरह डोमेस्टिक और लोकल क्राइम है, तो उसी के लिए जो दो चीजें हैं, दो थ्योरीज हैं. एक है इविल नेचर ऑफ द ऑफेंस, जिसको हम कहते हैं मॉलम इनसे, MALUMINSE, that is the Latin word molum inse, which means the evil nature of the offense. According to one theory, the definition as an international crime is tied to nature of the offense. This theory draws on the Latin concept of maham inse, means wrong or evil in itself. The crime is considered inherently wrong, independent of the regulation governing the conduct. Because of its evil nature, factors that are taken into account are its evil intent, जो है इंटेंशन जो है वो रॉन्ग हो, इविल हो और बहुत ही डेंजरस हो, जो सच है जिस तरह कोई अटैक ऑन ह्यूमन जो ह्यूमन काइंड, फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन डिग्निटी, एंड जिसमें ह्यूमननेस हो, इन ह्यूमन जो है बिहेवियर हो. सो इस जो उसकी ग्रेविटी हो, उसका स्केल जो वो इंटरनेशनल और क्रॉस जुडिशनल डायमेंशन जो इंक्लूडिंग द नीड फॉर द इंटरनेशनल एनफोर्समेंट और इट्स परसेप्शन फॉर इंस्टेंस इज शॉकिंग द कॉन्शियस ऑफ द ह्यूमैनिटी. मतलब कि किसी को मर्डर करना, सिंपली डोमेस्टिक क्राइम में मर्डर एनी पर्सन, तो ये सबसे पुराना क्राइम है और रिपीटेडली हर सोसाइटी में जो है डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं जगह पे किसी का मर्डर होता है किसी वजह से. लेकिन मर्डर ये शॉकिंग तब बनेगा जब कोई मास मर्डर हो, जिस तरह भी हजारा कम्युनिटी के 11 लोगों को एक जो है कान में मजदूरों को, लेबर्स को दे वर किल्ड ब्रूटली. तो ये क्या हुआ, ये दैट इज द शॉकिंग. तो दैट अगर कोई मास मर्डर हो किसी एथनिक क्लास का, तो दैट इज उसमें फिर ये इंटरनेशनल जुरिसडिक्शन बन जाएगा. तो ये जो डेफिनेशन है कैप्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ क्राइम्स. अ क्लासिक एग्जांपल जो पायरेसी है, द फर्स्ट, अच्छा पायरेसी इज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्राइम. Pirates on the high seas were called enemies of the humankind. तो उसमें फिर क्या हुआ कि फिर any state could prosecute them regardless of their nationality or place of the commission of the crime. Later new forms of the international crimes developed in the 18th century. Origin of the war crimes emerged in 1915. So what is today called the Armenian genocide was qualified as the crime against civilization. So after World War II, aggressive war was prosecuted under the notion of the crimes against the peace. So it was seen as an attack on the society of the states. The nation of the crimes against humanity emerged. तो ये वो crimes थे जो emerge हुए by the time by the act. So it also accepted the idea that violation by the state against its own population constitute an attack on humanity and humanness. So it is grounded in a modern conception of the international society as a society of the people. So these notions were classified, developed in the post-war codification. In 1996, the International Law of Commission, the United Nations provided a modern list of the crimes against the peace and security of the mankind.
based on the international practice since Nuremberg and Tokyo. So which includes the following categories of the crime. वो उस जो जिस तरह जो है क्राइम जो है डिफाइंड हुआ और वर्ड ऑफ द पीस जो है जब डेंजर में आया तो उस वक्त फिर क्राइम जो है कुछ कैटेगरीज डिफाइन की गई, जिस तरह एग्रेशन, जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, crimes against the United Nations and associate personnel and war crimes. Main concept जो है that these crimes can be investigated and prosecuted internationally even though they are not enshrined in a universally applicable treaty. States which have custody over perpetrators have the obligation to take the necessary and reasonable steps to apprehend the offender and ensure the prosecution and trial by the competent jurisdiction. ये तो था सबसे पहला कॉन्सेप्ट। जो दूसरा है द सेकंड नंबर जो सेकंड थ्योरी है वो है प्रोहिबिटेड एविल। जो हार्म इनसे मींस जो है इवन थिंकिंग और इवन एविल जो है सॉरी एविल थिंकिंग और एविल इंटेंशन इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट जो बिहेवियर है दैट कॉन्स्टिट्यूट अ हिनियस टाइप ऑफ द क्राइम्स। और दूसरा है जो दूसरी कैटेगरी है मालम प्रोहिबिशन। A second theory relies more directly on regulations, in particular the level of prohibition. According to this view, an international crime is an act that is directly criminalized by international law. A typical example is the violation of a criminal norm that is contained in an international treaty or international customary law. The classic early example are United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crimes of Genocide, or the so-called grave breaches of the four Geneva Conventions. In the line with this theory, it is increasingly accepted the crimes included in the jurisdiction of ICC or international crimes. ये जो this is the two theories which are the concept what is the actual concept of the crime. एक वो क्राइम जो बहुत इविल टाइप ऑफ क्राइम हो जो महाम इनसे, और दूसरा प्रोहिबिशन मौलम इनसे जो है दैट मींस crime which has been prohibited or by the convention of the international जो है वो criminal law के कोविनेंट्स के तहत। फर्दर जो इसका कॉन्सेप्ट है दैट रिक्वायर्ड डिटेल लेक्चर व्हिच रिक्वायर्ड मोर टाइम ऑन इट। और सिंपल कॉन्सेप्ट जो व्हिच रिक्वायर्ड दी मोर डिटेल लेक्चर, आई विल प्रेफर कि मैं आपको ये जुरिसडिक्शन पे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं मुख्तलिफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द क्राइम इन इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में, अमेरिकन क्रिमिनल लॉ में किस तरह कॉन्स्टिट्यूट होता है। जिस तरह हमारा जनरल क्रिमिनल लॉ जो है उसमें क्राइम जो है कॉन्स्टिट्यूट होता है डिपेंड अपॉन दी अवर जो है सबसे पहले हमारा इंटेंशन, हमारे मेंटल थिंकिंग है वो सोच जो है उसके साथ होनी चाहिए, जिसको मेंसरिया कहते हैं। मेंटल एलिमेंट जो है वो व्हाट इज देयर मेंटल एलिमेंट टू कमिट द क्राइम, क्योंकि हर एक जो है वो बजाय जुर्म लगता है लेकिन वो जुर्म नहीं होता। उसके रीजन ये है कि सम टाइम कि कोई भी आप क्राइम करें विद द पर्सन कमिटिंग एनी क्राइम विद इंटेंशन, और उसको क्राइम करने का जो है वो कंसिक्वेंसेस भी पता हो, और फिर बाद में वो कोई क्राइम कमिट करे तो वो क्राइम आएगा। अदरवाइज आपको उस बजाय कोई अब फॉर एग्जांपल एक शूटिंग हो रही है, शूटिंग का एक सीन है, उस सीन के मुताबिक पर्सन जो है मर्डरिंग एनी पर्सन, वो जो है टेबल पे पड़ी गन उठाएगा और गन से जाके फायर करेगा। वो एक बजाय एक सीन दिखाया जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि अब जिसको वो उस पिस्टल से जो कि बजाय उसको वो सोच रहा होगा कि दैट जो पिस्टल जो है दैट इज नॉट जेन्युइन। वो एक जो है जो जेन्युइन पिस्टल नहीं है, एक जाली पिस्टल पड़ी हुई है जिसको वो उठा के प्रिटेंड करेगा कि वो उसको मार रहा है, लेकिन पर्सन इज नॉट नोइंग द फैक्ट दैट के वो जिसको ये सीन जिसके साथ कर रहा है उसका कोई एनिमी है, पर्सन एनिमिटी विद दैट पर्सन। उसने उस को डिजाइन किया कंस्पिरेंसी को, और वो उसने उसकी जगह एक लोडेड गन रख दी।
अब वो सीन कार्ड कराने के वक़्त उसने गन उठाई और वो प्रिटेंड करेगा फायर में, उससे वो फायर हो जाएगा। बज़ाहिर तो लग रहा है कि उसने इसको क्राइम कमिट किया है, एक बंदे को मारा है, लेकिन वो उसका इरादा नहीं था, तो इसको हम कहते हैं मेंस crime is the combination of the two acts. Number one, mens rea and actus rea. Mens rea is a mental element which is mandatory कि a person committing crime उसका motive होना चाहिए और उसका intention होना चाहिए कि वो crime commit करना चाह रहा है। जिस तरह समटाइम पर्सन जो है लोग जाते हैं कुछ बंच ऑफ पर्सन्स जो है क्रिमिनल्स वो जाते हैं कहीं पे और फिर जाके वो सिर्फ सिंपली वहां पे जाके उनका मकसद ये है कि वो कोई चीज चुराने जाते हैं, लेकिन उसको वहां उनके किसी को मारने का इरादा नहीं था। लेकिन बाय द सिचुएशन ऐसा हो जाती है कि वहां पे उनसे कोई मर्डर हो जाता है या किसी को वो इंजर्ड करके आते हैं। तो दैट इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द क्राइम। उसका कंसेप्ट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो मेंस रिया इज वन ऑफ द एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट है एक्टस रिया के फिजिकली उसमें आप वो जो मेंस रिया जो आपने प्रिपरेशन की है उसको फिजिकली उसको आप परफॉर्म करें। फिर उसमें बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, अबैटमेंट के पर्सन समटाइम मेंटली जो है वो उसके साथ होता है, उसका इंटेंशन होता है, लेकिन फिजिकली वो नहीं होता। समटाइम के लोग फिजिकली तो होते हैं लेकिन मेंटली उसमें नहीं होते हैं, तो वो बहुत सारे और कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वी विल डिस्कस इन डिटेल में। आई इट इज माय विश कि आई विल गिव यू अ वेरी इंपैक्टफुल concept of the crime to you, and it will benefit you very much in a जो है future implication। तो उसमें फिर डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जिस अमेरिकन क्रिमिनल लॉ है, कॉन्टिनेंटल लॉ ऑफ जुरिसडिक्शन है, फ्रेंच क्रिमिनल लॉ, डेनिश जो है उसका क्रिमिनल लॉ और इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, उनमें क्राइम की जो कॉन्सेप्ट क्या है तो उसको आई थिंक इसका जो आई गिव यू थॉरो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है इसका, और यू हैव उसको आपने समझ भी लिया होगा कि आई विल आल्सो रिकमेंड यू के आप बिफोर जब इसको हम डिटेल में डिस्कस करें, हमारा वो है स्टेट क्रिमिनलिटी, हाउ स्टेट इज रिस्पांसिबल। जो है स्टेट किस तरह रिस्पांसिबल है, द नोशन ऑफ द क्रिमिनलिटी एसेंशियली रेफर्स टू द लायबिलिटी ऑफ क्रिमिनल नेचर, but liability itself is based on the attribution of the criminal offense to a particular individual। जो है दिस इज द अच्छा क्रिमिनल लायबिलिटी विल नेवर ट्रांसफर टू एनी अदर्स जो है शोल्डर अ पर्सन एनी पर्सन हु इंडिविजुअली अगर वो कोई पार्टिसिपेट करता है तो फिर वो शेयरिंग किस तरह करता है उसके डिफरेंट आपने जनरल क्रिमिनलिटी में आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब स्टेट किस तरह रिस्पांसिबल होगा, क्रिमिनल लायबिलिटी इन बोथ नेशनल इंटरनेशनल लॉ इज जनरली एट्रिब्यूटेड टू जो है नेचुरल पर्सन and exceptionally also to other legal entities, as was the case with the several Nazi-related organizations after the Second World War. The majority of the international offenses are committed by the individuals acting under the use of or on behalf of the state orchestrated policies, whether overtly or clandestinely. The policy of the apprehend in the South Africa, the genocide against Jews and Armenian and Tutsi, as well as cases of the state-sponsored terrorism, for example, Libyan involvement in the Lockerbie case। तो उसमें कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें स्टेट क्रिमिनलिटी जो है वो नजर आती है, जिसमें स्टेट स्पॉन्सर जो क्राइम्स होते हैं जिसमें स्टेट स्पॉन्सर करता है या उनको फ्यूल करता है, तो उसमें फिर स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है। अदरवाइज जो है इसमें जो क्रिमिनल इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में सेम जनरल लॉ में जो लायबिलिटी विल नॉट ट्रांसफर कि आप किसी एक की वजह से किसी पूरी कम्युनिटी को आप नहीं सजा दे सकते। अगर अगर वो डोमेस्टिक एक जो पर्सपेक्टिव में देखा जाए, इसको फर्दर हम इस तरह इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक वेरी ब्रीफ एक आपको जो है इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं। द नोशन ऑफ द क्रिमिनलिटी एसेंशियली refers to the liability of the criminal nature. Liability itself is based on the attribution of the criminal offense to a particular individual। जो एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम है उसमें इनिशियली जो लायबिलिटी है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे ही जो एट्रीब्यूट होती है। क्रिमिनल लायबिलिटी इन बोथ नेशनल इंटरनेशनल लॉ इज जनरली एट्रिब्यूटेड टू नेचुरल पर्संस, and all crimes are committed by the natural persons, and it seems self evident that
personal culpability should somehow follow personal attribution. However, that will eventually materialize into criminal liability in a complex exercise in international legal system. तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह स्टेट स्पॉन्सर क्राइम्स होते हैं तो उसमें स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है, अदरवाइज इट इज एट्रीब्यूट ओनली जो है जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे आती है, फिर वो स्टेट उसकी डिमांड करता है, या तो वो डोमेस्टिक उसके जस्टिस सिस्टम में उसकी प्रोसिक्यूशन होगी, या फिर वो जो है वो आईसीसी में उसकी प्रोसिक्यूशन होगी। जिस तरह सूडान अगर स्टेट फेल हो जाता है तो फिर उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देखा जाता है।